Hello everyone, my name is Saurabh Kumar and you all are watching the Connaissance channel. आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेके आया हूँ that contains the current affairs for the upcoming examinations of CDS, FCAT and NDA in 2021. So without any delay, let's get started. Before starting, if you not subscribed this channel, subscribe it and hit the bell icon to get interesting information like this to you as soon as they have been uploaded. So let's get started. So the first question is, which airport becomes the first airport of the Airports Authority of India, abbreviated as AAI, which is entirely solar powered? Means all the electricity is being taken care by a solar plant itself and is completely power neutral. मतलब कहीं से भी पावर लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स सोलर पावर प्लांट से ही की जाएगी. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ पुडुचेरी एयरपोर्ट, दैट इज़ ऑप्शन ए. Talking about this airport, it has a power consumption of 500 kilowatt that is been taken care by the solar power plant itself, and now it is power neutral. इसमें जोरहाट एयरपोर्ट जो कि ऑप्शन डी, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट एयरपोर्ट अंडर AAI and it has 75 kilowatt rooftop solar power plant that takes care for its electricity consumption. So this is importance of the Zorhat airport. Next is question number 2, that is, which initiative has been launched by Indian Railways for protection of women? So Indian Railways जो कि बेसिकली साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन. वुमेन किस स्टेशन पे बोर्ड करती है ट्रेन और जिस स्टेशन पे डी बोर्ड करेगी, इसके बीच में जो ट्रेन में वो टाइम स्पेंड करेगी उसमें उनकी सेफ्टी के लिए कंसिडर किया गया है. सो इट इज़ द ऑपरेशन माई सहेली. And the other important question that can be made from this is that who does the funding for this operation माई सहेली? कौन इसकी फंडिंग करता है माई सहेली ऑपरेशन की, जो कि इंडियन रेलवेज में लॉन्च हुआ है? सो क्या वो रेलवेज फंड करता है? सो आंसर इज़ नो, रेलवे नहीं फंड करता है. इसकी फंडिंग की जाती है निर्भया फंड से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एज पर पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो पहले है, ये पब्लिक अफेयर इंडेक्स क्यों दिया जाता है, किस बेसिस पे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस सब नेशनल लेवल पे कैसी है एक पर्टिकुलर स्टेट की, उसे जज करने के लिए दिस पब्लिक अफेयर इंडेक्स इज़ बीन गिवन. और इसके 5 पैरामीटर्स हैं, 5 थीम्स, ऑन बेसिस ऑफ दैट स्टेट गवर्नेंस इज़ बीन जज्ड. और वो थीम्स हैं 5. फर्स्ट, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी. सेकेंड, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस. थर्ड, rule of law. Fourth, regulation quality. And fifth, corruption control. So on the basis of 5 themes, these 5 themes, the public affair index has been done. So in this question, first is Kerala is first among largest state category and Uttar Pradesh is last. So option पहला है केरला फर्स्ट है लास्ट स्टेट कैटेगरी में और उत्तर प्रदेश लास्ट है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड है गोवा रैंक्ड फर्स्ट अमंग स्मॉल स्टेट कैटेगरी एंड मिजोरम रैंक लास्ट. सो इसको ऑप्शन में गोवा रैंक फर्स्ट अमंग स्मॉल स्टेट तो सही है, मगर मिजोरम नहीं है, उसकी जगह है मणिपुर. मणिपुर रैंक लास्ट इन स्मॉल स्टेट कैटेगरी. सो ऑप्शन 2 गलत है. थर्ड इज चंडीगढ़ रैंक फर्स्ट अमंग यूनियन टेरिटरीज एंड दादर एंड नागर हवेली रैंक लास्ट. तो ऑप्शन 3 भी सही है. तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 3 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन, which state has recorded the best sex ratio as per 2018 report on vital statistics of India? This report is very much important for 2020 examinations because it is based on census. Like in 2011 the census was done और उसके बेसिस पे नेक्स्ट ईयर 2012 एंड 13 में उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते रहे. So as you all know that in 2021 there will be again census being done. So related to that, this type of questions are very much important. So vital statistics of India क्यों किया जाता है? It has been done in order to find the sex ratio. What is the sex ratio? It is the number of women born per 1000 male. इसके बेसिस पे ये vital statistics of India कैलकुलेट किया जाता है. तो on the basis of that the answer for this question, that is which state has recorded the best sex ratio, किस स्टेट का बेस्ट सेक्स रेशियो है, तो वो है आंसर ए, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश. अब अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट है और इसके अलावा हमें क्या याद रखना है, नेक्स्ट 5 तक याद रखने हैं. तो सेकंड इज़ नागालैंड, थर्ड इज़ मिज़ोरम, फोर्थ इज़ केरला एंड फिफ्थ इज़
Karnataka, and the worst was Manipur. And among the that, you can see in the right side there is a map shown in this also. The major state, on the basis of major state, if we consider, Kerala topped this ranking of vital statistics of India, and Punjab was the last if we consider the major state. Next is Ramsar Convention is an international environment treaty established by which organization? So Ramsar Convention was signed in 1971 by UNESCO. So the answer for this question is B, UNESCO. और एम था ऑल वेटलैंड नेटवर्क्स डाइवर्सिटी को कंजर्व करने और मेंटेन करने का. On the basis of that, Ramsar Convention was done in 1971 by UNESCO. So you can see here in the map there are 42 Ramsar sites that are being considered in India, and in which Uttar Pradesh has the largest number of Ramsar sites, that is 8 Indian wetlands. So Uttar Pradesh tops the rank of containing number of Ramsar sites. Next question is, consider the following statement regarding ब्रू और रियांग कम्युनिटी. रिसेंटली हमें ये ब्रू या फिर और रियांग कम्युनिटी के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिसेंट एग्जामिनेशंस में ट्राइबल बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंस. So on the basis of that, this question becomes very much important. So first is, Bru or Riang community is indigenous to northeast India, living in Tripura, Mizoram and Assam. ब्रू कम्युनिटी या रियांग कम्युनिटी इंडिजिनस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो कि रहते हैं त्रिपुरा, मिजोरम और असम में. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड इज, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज particularly vulnerable tribal group, that is also known as PVTG. सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट कि वो लोग रिकॉग्नाइज किए गए हैं, उनको particularly vulnerable tribal group में रिकॉग्नाइज किया गया है. सो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस both options are correct. So answer C, both 1 and 2 is correct. So in 1997 में क्या हुआ था, these tribes actually moved. ब्रू जो कम्युनिटी है वो मिज़ोरम से त्रिपुरा में मूव गई थी, क्योंकि there was conflict between 1995 between Mizo community and Bru community. Due to that, Bru's community members marched to Tripura. But after that, government and state government started settle these Bru community people that marched to Tripura in the border area between Tripura and Mizoram. In Tripura only, that is a district in Kanchanpur. Next is, which ministry launched a campaign named Local for Diwali? So for this the answer is Ministry of Textiles. और इस कैंपेन का मकसद है टू प्रमोट इंडिया हैंडीक्राफ्ट एंड अर्ज पीपल टू टेक हाउस होल्ड थिंग्स यूज बाय मेड बाय लोकल ओनली. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. नेक्स्ट इज, हाउ मेनी साइट्स ऑफ इंडिया among 36 global sites are selected by WEF to pioneer roadmap for smart cities? Actually part of G20 Global Smart City Alliance. It is done, and all over the world 36 countries are being chosen, in which 4 are from India. So the answer for this question is A, 4. And these 4 cities are Indore, Bangalore, Hyderabad and Faridabad. Next is, consider the following statement regarding ease of doing business EODB rankings. First, the World Bank publishes a doing business report which carries the ease of doing business ranking. इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक जो है वो पब्लिश करता है बिजनेस रिपोर्ट जो कि कैरी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. सेकेंड है, फ्रॉम 2014 to 2019 इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स रैंकिंग बाय 100 पोजीशंस. तो इसके अकॉर्डिंग 2014 से लेकर 2019 तक इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड रैंकिंग by 100 positions. So as you can see, here is an article I have pasted that shows in 2014 the rank of India was, according to ease of doing business, 142, and in 2019 it came to 63. The difference is 79 position. It is not 100 positions. So only first one is correct, second is wrong. The answer for this question is A, 1 only. Next question is, consider the following statement regarding Rudram missile. Recently India ने एक मिसाइल लॉन्च टेस्ट किया है. On the basis of that, you have to tell which of these 3 points listed here are correct. First, Rudram is India's first indigenous anti-radiation missile. Rudram है इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. येस, इट इज़ फर्स्ट इंडियाज एंटी रेडिएशन मिसाइल. सेकेंड, इट इज़ एन एयर टू सरफेस मिसाइल डिज़ाइन बाय DRDO. सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ ये एक DRDO के द्वारा डिज़ाइन की हुई एयर टू सरफेस मिसाइल है. येस, सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. Third is, it is designed to detect, track and neutralize the adversary's radar, communication assets and other radio frequency sources. Third option is correct also, that says that
इट इज़ मेड, ये बनाई गई है टू डिटेक्ट, ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज द एडवर्सरी रेडार कम्युनिकेशन एसेट्स और अदर रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये मीन्स ये डिटेक्ट कर लेगी रेडार कम्युनिकेशन एसेट्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेज को, और उस पर जाके फिर ये हिट कर देगी। तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री, ऑल दिस थ्री पॉइंट्स आर करेक्ट, सो आंसर सी 1 2 3 is the correct answer for this question. Next is the red cherry pepper chili, Dele Khursani, of which state has earned the geographical indication GI tag from the Union Department of Industry Promotion and Internal Trade. You should know that GI indication tag is given by Union Department of Industry Promotion and Internal Trade. Which state has this GI tag got for this red cherry pepper chili? The answer for this question is A. Sikkim. Next question is who won the men's 2020 French Open single title? Since you all know that this Grand Slam questions are very much important in the CDS NDA examinations and also in FCAT. So in 2020 French men's Open single title is been won by Rafael Nadal, and by this he became the 30th French Open single title winner and also 20th Grand Slam title winner. Next question is consider the following statement regarding Global Hunger Index 2020. So as you all know that India was at 94 positions out of 107 countries. So on the basis of that, which of the following given options are correct? First, out of the total countries ranked in Global Hunger Index 2020, more than 3 by 4th of the countries far better than India. As you all know that 94, India rank was 94 out of 107. So yes, it is the correct option. That is, it stands 3 by 4th of the countries far better than India. Next is Global Hunger Index comprehensively measures and tracks hunger at the global, regional and country level. So second option is also correct, देखता है कि Global Hunger Index measure करता है और track करता है hunger at global, regional और country level पे. So option 2 is also correct. Third state index is published by Food and Agriculture Organization. So third option is wrong. It is been published by organization that is concerned worldwide and Wealth Hunger Aid. So on the basis of this, option A is correct, 1 and 2. Next is name the indigenously built anti-submarine warfare stealth corvettes under Project 28 which is being commissioned into the Indian Navy. Recently, there is been in news warfare stealth corvette has been introduced in Indian Navy. So what is its name? The answer is INS Kavaratti, and this is the fourth commissioned anti-submarine warfare stealth corvette, comes under the Kamorta class anti-submarine warfare stealth corvettes, Kamorta class corvettes, and the other three that have been launched are given here, that is INS Kamorta, INS Kidmat and INS Kiltan. So this was all about the current affairs. Thank you for listening and watching.